Good morning, dear students. Hope you all are good in revising maths. Today, we will do the revision of our chapter Playing with Numbers. See the first topic, factors and multiples. What are factors? If two or more numbers are multiplied together, each of the number is a factor of the product. That means if we multiply टू और मोर देन टू नंबर्स, अगर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा है वो सब उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं. सी द एग्जाम्पल, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 105. सो हियर 1, 7, 5 and 3 are the factors of 105. See the properties of factors. 1 is a factor of every number. 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. Every factor of a number divides the number exactly. किसी भी नंबर का फैक्टर उसको completely divide करता है without remaining the remainder. The number of factors of a number is finite. हर फैक्टर के जो नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं. नाउ सी मल्टीपल्स. द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द टू नंबर्स. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, द प्रोडक्ट दैट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट टू नंबर्स इज ओनली द मल्टीपल ऑफ दोज टू नंबर्स. जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट ही उन टू नंबर्स का मल्टीपल होता है. सी द एग्जाम्पल, 5 into 4 that is equals to 20. So here 20 is a multiple of 5 and 4 both. Now see the properties of multiples. Every number is a multiple of the number itself. हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है. जैसे 20, सो 20 का मल्टीपल 20 भी होगा. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. हर नंबर 1 का भी मल्टीपल होता है. एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट मल्टीपल्स. मीन्स एवरी नंबर कैन हैव द नंबर ऑफ मल्टीपल्स. कितने भी उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं. Now let's solve some questions related to factors and multiples. See the first question. Write all factors of 36. So the factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. The next one, 81. Factors of 81 are 13, 9, 27 and 81 itself. So these are the factors of 81. How we will identify that these only are the factors of the numbers? As we have studied in the properties of factors that the factors of a number divide the number exactly. किसी भी नंबर का कोई फैक्टर उसको completely divide करता है. So if we take the example of number 36, so if we divide 36 by 2, then it is fully divisible. So that proves that 2 is a factor of 36. So this is how we can find out the factors of any number. See the next question. Write the first 5 multiples of. So here we have to write down the first 5 multiples of the following number. So finding out the multiples of any number, what we do, we multiply it with that number. फॉर एग्जाम्पल हियर दे हैव आस्क्ड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. हमसे यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे गए हैं. तो फर्स्ट 5 नंबर्स क्या है हमारे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर विद दीज नंबर्स रिस्पेक्टिवली एंड वी विल गेट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. सी द फर्स्ट वन, 30. So the first multiple of 30 is 1 into 30, that is equals to 30. Second multiple of 30, 2 into 30, that is equals to 6. Now the third multiple, 3 into 30, that is equals to 90. The fourth multiple, 4 into 30, that is equals to 120.
and the fifth multiple 5 into 30, that is equals to 150. So this is how we can find out the first 5 multiples of any number. See the next question. 12. So here we have to find out the first 5 multiples of 12. Similarly, we will multiply the first 5 numbers with 12 and we will get the first 5 multiples of 12. So 1 into 12, that is equals to 12. 2 into 12, that is equals to 24. 3 into 12, that is equals to 36. 4 into 12, that is equals to 48. 5 into 12, that is equals to 60. So 12, 24, 36, 48 and 60 are the first 5 multiples of 12. So this is how we find out the factors and multiples of any number. Now see the next topic, odd and even numbers. What are odd numbers? The numbers not divisible by 2 or not multiples of 2 are called odd numbers. That means those numbers which are neither divisible by 2, ना तो वो 2 से divisible होते हैं और ना ही वो 2 के multiples होते हैं. Those numbers are called odd numbers. What are even numbers? The numbers which are multiples of 2 or divisible by 2 are called even numbers. So just opposite of odd numbers. Odd numbers में numbers 2 से ना तो divisible होते हैं और ना ही 2 के multiples होते हैं. But even numbers में जो numbers 2 के multiples होते हैं या फिर 2 से divisible होते हैं वो numbers even numbers कहलाते हैं. Now see the question. Find out which of the following numbers are odd. So here we have to identify that the number is odd or not. See the first one, 55. So 55 is neither divisible by 2 nor it is a multiple of 2. 55 ना तो 2 से divisible है और ना ही 2 का multiple है. So it is a odd number. See the next one, 44. 44 is divisible by 2. 2 से divisible भी है और 2 का multiple भी है. So 44 is an even number. It is not an odd number. See the next one, 51. 51 ना तो 2 से divisible होता है और ना ही 2 का multiple है. So it is an odd number. See the next one, 47. 47 is also not divisible by 2 and it is also not a multiple of 2. So it is also a odd number. So this is how we find out that the number is even or odd. See the next topic, test of divisibility. Before explaining you different divisibility test of the numbers, I would like to explain you what is a divisibility test. The test of divisibility are different rules of the numbers to find out that the number is divisible by that number or not without doing the actual division process. बिना डिवीजन करे जब हमें फाइंड आउट करना होता है कि कोई नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं है तो उसके लिए हम उस नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी कम हो जाती हैं और हमारा टाइम भी सेव होता है. सी द फर्स्ट वन, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if the ones digit is 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसकी वंस की प्लेस पर या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 6 और 8 इनमें से कोई नंबर होगा. See the example, 10, 16, 24, etc. So here you can see in the number 10, at the ones place we have 0. So according to the divisibility test, the number 10 is divisible by 2. Similarly, 16, at the ones place we have 6. So according to the divisibility test, the number 16 is divisible by 2.
Divisibility test by 3. A number is divisible by 3 if the sum of digits of the number is divisible by 3. कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उस नंबर के डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होता है. See the example 15. So here the number 15 have two digits 1 and 5. So if we add both the digits, अगर हम दोनों digits को add करेंगे 1 plus 5 that is equals to 6 and we know 6 is divisible by 3. So the number 15 is also divisible by 3. Next 27. So when we add both the digits of the number 27 that is 2 plus 7 that is equals to 9 and 9 is divisible by 3. So the number 27 is also divisible by 3. 45. So when we add both the digits of the number 45 that is 4 plus 5 that is equals to 9 and we know 9 is divisible by 3. So the number 45 is also divisible by 3. So this is how we can find out that the number is divisible by 3 or not. Divisibility test by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last two digits is divisible by 4. कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा होता है वो भी 4 से डिविजिबल होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 116. So here the number formed by last 2 digits of this number is 16 and we know 16 is divisible by 4. So the number 116 is also divisible by 4. See the next example 20,592. So the number formed by the last 2 digits of this number is 92 and we know 92 is divisible by 4. So the number 20,592 is also divisible by 4. So this is how we can find out that the number is divisible by 4 or not. Divisibility test by 5. A number is divisible by 5 if the number in the ones digit is either 0 or 5. So when a number is divisible by 5, when at the ones place either it is 0 or 5. कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? जब उसकी ones place पर या तो 0 हो या फिर 5 हो. See the examples 15. So here you can see at the ones place we have 5. So the number 15 is divisible by 5. 25. Here also at the ones place we have 5. So we can identify that 25 is divisible by 5. 75. Here also at the ones place we have 5. So the number is divisible by 5. 40. Here at the ones place we have 0. So the number is divisible by 5. So this is how we can check that the number is divisible by 5 or not. Divisibility test by 6. A number is divisible by 6 if a number is divisible by 2 and 3 both. Now how we can find out that the number is divisible by 6 or not? The number should also divisible by 2 and 3 both. कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. तो वहाँ पर हम 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करके देखेंगे. अगर दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स को वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है. See the example 24. So here the number 24 is divisible by 2 and it is also divisible by 3. So we can identify that the number 24 is also divisible by 6. 42. 42 is also divisible by 2 and 3. So the number 42 is also divisible by 6. So this is how we can check that the number is divisible by 6 or not.
Divisibility test by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. कोई भी नंबर 8 से divisible कब होता है? जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा होता है वो भी 8 से डिविजिबल होता है. अगर हमारे पास मोर देन 3-4 डिजिट्स का नंबर है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे? हम उसके लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसको देखेंगे. अगर उन लास्ट 3 डिजिट से फॉर्म हुआ नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है. सी द एग्जाम्पल 72,984. So here the number formed by the last 3 digits of this number is 984 and the number 984 is divisible by 8. So the number 72,984 is also divisible by 8. Now see divisibility test by 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits of the number is divisible by 9. कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है? जब उस नंबर के डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होता है. सी द एग्जाम्पल 24,561. So when we add the digits of this number, that is 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 1, that is equals to 18. And we know 18 is divisible by 9. So the number 24,561 is also divisible by 9. Next number 7,89,651. So if we add the digits of this number, that is 7 plus 8 plus 9 plus 6 plus 5 plus 1, that is equals to 36. And we know 36 is divisible by 9. So the number is also divisible by 9. See the next example 20,592. So here also we will add the digits of this number, that is 2 plus 0 plus 5 plus 9 plus 2, that is equals to 18. And we know 18 is divisible by 9. So the number 20,592 is also divisible by 9. So this is how we can find out that the number is divisible by 9 or not. Divisibility test by 10. A number is divisible by 10 if the digit in the unit place is 0. कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है? जब उसकी यूनिट प्लेस पर 0 होता है. सी द एग्जाम्पल 40. As we can see at the unit place we have 0, 60, 70. Both the numbers are having 0 at their ones place. So these all numbers are divisible by 10. And this is how we can find out that the number is divisible by 10 or not. Divisibility test by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of its digits in odd and in even places is either 0 or multiple of 11. That means कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है? जब हम उसके ऑड प्लेसेस के सम को और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है. सी द एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर 30,789. So first we will find out the sum of the digits that are at odd places. So the number 3, 7 and 9 are at odd places. So we will add them. 3 plus 7 plus 9, that is equals to 19. And now we will add the digits that are at even places. So
sum of the digits at the even places, that is equals to 0 plus 8, that is equals to 8. Now after finding the sum, we will find the difference of odd and even places. So 19 minus 8, that is equals to 11, and we know 11 is a multiple of 11. As we know, every number is a multiple of itself. So the number 30,789 is divisible by 11. So this is how we can find out that the number is divisible by 11 or not. So while applying all these rules of divisibility, we can find out that the number is divisible by any number or not without doing the actual division process. Hope you have understood all the topics that we have discussed today. So keep revising and practicing. Thank you.